Good morning to all of you. Today we will going to solve two problems. First problem in the classroom and second one is a homework problem. So let's see. Problem number 15. Problem number 15 goes like this way. AB are partner of AB and company sharing profit and loss in the ratio of 2:1. So AB is a partners in the ratio of 2:1 and C and D are partners of CD and company sharing profit and loss in the ratio of 3:2. 3:2. On 1st April, on 1st April 2020, they decided to amalgamate and form a new firm, Measures AD and Company, where in all the partners of both the firm would be partners sharing profit and loss in the ratio of 2:1 is to 3:2 respectively to A, B, C, D. Their balance sheet on that day were as under. On the liability side, we have a balance of all the four partners, reserve with both the company, creditors with both the company, due to AB and company. Okay. So here we have a problem of interbank transaction, inter-firm transaction. On the asset side, we have building, machinery, furniture, stock, debtors, cash at bank, cash in hand with both the company, and here we have due from CD and कंपनी. CD कंपनी को AB कंपनी से क्या करना है बेटा? देना है. यानी AB कंपनी को CD कंपनी से पैसा लेना है. इसको देना है. ठीक है? So this is called as inter-firm transaction. ठीक है? अब ये दोनों कंपनी क्या हो रही है? मर्ज हो रही है. दोनों कंपनी क्या हो रही है? अमलगमेट हो रही है. Now let's see the terms of condition of amalgamation to took over the business on the following terms. Number one, building was taken over by 1 lakh rupees and 1,25,000 of AB and company and CD and company respectively. So let's put a tick mark on building. We have a two new value of building. Then machinery was taken over at rupees 1,25,000, 1,10,000 of AB and company and CD of company. So let's put machinery also. Goodwill of AB company was worth rupees 75,000 and that of CD worth rupees 50,000. Goodwill account was not to be opened in the book of a new firm. यानी नए फर्म में गुडविल नहीं होगा. That means it has to be written off. The adjustment being recorded through कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर. ठीक है, जो भी आप ट्रांजेक्शन करोगे किसमें रिकॉर्ड करना आपने? कैपिटल अकाउंट में. ठीक है, और कैपिटल अकाउंट में डिफरेंस आएगा तो कहां जाएगा आपका? करंट अकाउंट या कैश में, वो देखेंगे हम आगे. पॉइंट नंबर सी सेज प्रोविजन फॉर आरडीडी टू बी क्रिएटेड अगेंस्ट डेटर 5,000 in respect of AB company and 8,000 in respect of C&D company. ठीक है, you are required compute the adjustment necessary for goodwill. ठीक है, that we will do. Pass journal entry. journal entry बोलेगा हम लेजरी पोस्टिंग करेंगे in the books of AD and company assuming that excess or deficit capital taking D's capital as a base capital with reference to the share in the profit are to be transferred to current account. यहां पर देखो क्या बोला है, पार्टनर कैपिटल से एडजस्टमेंट करना है और पार्टनर कैपिटल में डिफरेंस आएगा तो किसमें एडजस्ट करना है बेटा? यहाँ पे देखो किसमें एडजस्ट करना है? करंट अकाउंट में. ठीक है, अभी डिफरेंस आएगा कैसे? फिक्स कैपिटल मेथड है क्या? ये फिक्स कैपिटल मेथड है. कौन सा मेथड है? फिक्स कैपिटल मेथड. ले पे कैपिटल दिया हुआ नहीं, कैपिटल हमको निकालना है बाय टेकिंग डीज कैपिटल एज अ बेस कैपिटल. ठीक है, तो डी का रेशियो कितना बेटा? डी का रेशियो है 2. अगर डी का रेशियो 2 है तो उसके हिसाब से रेशियो से हमको बाकी सबके भी निकालने हैं कैपिटल. ठीक है, सो आई होप क्वेश्चन इज क्लियर विद एवरीवन. ऑल थिंग आर करेक्ट, ओनली द लास्ट पार्ट इज slightly confusion that we will solve it while solving a problem. So we are into a working note. First of all, we will going to calculate what? Purchase consideration, and for calculating purchase consideration we have to write down all the assets and liability at market value. So पहले asset के नाम लिख लेते हैं. building, machinery, furniture.
building machinery, furniture, stock, debtors due from C, E and company, cash at bank, cash in hand and गुडविल। ठीक है, अब हम देखेंगे कि लायबिलिटी में क्या क्या है। लायबिलिटी में हमारे पास है ओनली क्रेडिटर्स। So let's write down the value of each and every item. बिल्डिंग का एज पर एडजस्टमेंट नंबर 1 बिल्डिंग और मशीनरी का नया वैल्यू दिया हुआ है। सो वी हैव वैल्यू 1 लाख और 1,25,000, 1 लाख एंड 1,25,000। ठीक है, व्हेन इट कम्स टू मशीनरी इट इज 1,25,000, 1,10,000, 1,25,000, 1,10,000। okay, furniture there is no adjustment, so we will take as it is only 15,000 and 12,000. Stock same value you have to take, book value 24,000 and 36,000. Then we have debtors. On debtors we have adjustment number C, which says we have to make a provision for RDD 5,000 as ABN company concern and 8,000 in CD. So it will come 60,000 and 70,000. 60,000 and 70,000. Then due from CD company, it is only in the column of AB 47,000, 47,000, and here it will be dash. Okay. Cash at bank we have 18,000 and 15,000, 18,000 and 15,000. Cash in hand is concerned 4,000, 5,000. Goodwill is given in point number B, that is 75 and 50,000. 75,000 and 50,000. Okay. Creditors we have 52 and 35. 52,000 and 35,000. We also have one more item, due to A, B and company, amount is 47,000. Okay. So here we have taken everything. So we got purchase consideration of 4,16,000 as ABN company concerned and 3,41,000 for C and D company. Okay. Now moving to realization account. In the realization, we always write assets and liability that will go to realize to sundry assets. आप sundry assets, sundry liability डिटेल में भी लिख सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसा लमसम में भी लिख सकते हो. Choice is yours. 3,68,000 and 3,36,000. Okay, here by sundry liabilities, ठीक है, we have 52,000 and 82,000. ठीक है, यहाँ पर हमारे पास आएगा बाय न्यू फर्म अकाउंट, अमाउंट इज 4,16,000 and 3,41,000.
Apart from that, there will not be any other entry in realization account because all the assets and liabilities are taken over by a new firm. So straight away we will going to find out what to realization profit, which is transferred to partners capital account. So we have a partner like A, B, C, D. A, B, C, and D. Let's find out their profit. Here it is 1 lakh rupees straight away. Okay. And coming to C and D, it will be, I think, 87,000. Yes. Now, this amount is to be distributed amongst the partner as per their profit sharing ratio. A and B are partners in the ratio of 2:1, whereas CD are partner in the ratio of 3:2. So when 1 lakh divided by 3 comes to 3,333 multiplied by 2, it comes to 6,667. For B, it will be 3,333. Coming to C and D, they are partner in the ratio of 3:5. So divide by 5. ठीक है ये So here we got 52,200 for 52,200 for C, and for D it is 34,800. 34,800. Okay, so this is how we got our realization profit. Okay, now moving to partners capital account. So first of all, we will going to write down by balance brought down. A, we have 150, 1 lakh, 120, 80,000. 150, 1 lakh, 1 lakh, 20,000 and 80,000. Now we also have by general reserve by general reserve account. Okay, आ गए 66 and 54. So 66 divided by 3 comes to 22. So here it will be 44,000 and here it will be 22,000. And here it is 54,000. So I can say 54,000 divided by 5 multiply by 3. So I got 32,400. और यहाँ पर आ गया, मैं सीधा करके चलता हूँ 54,000 minus this particular amount. So I got 21,600. ठीक है. Now next is by realization account within a bracket profit, and A, the profit was 66,667 and B 33,333. For C and D we have to see 52,200, 52,200 and 34,800. So this is what we got a profit. Now
After this, they have said in the problem that goodwill should not be appeared in a new firm. Okay, and therefore we have to write off. Total goodwill we have 75 plus 50,000, 1,25,000. So goodwill is 1,25,000. And new profit sharing ratio between A, B, C, D, E is 2:1:3:2. This is what we got from here. 2:1:3:2. Okay. Now the total unit is 5. So 1,25,000 divided by 8. Divided by 8. Total unit is 8. So it comes to 15,625. I've already applied a formula. So I got a goodwill share of each and every partner. So here I will write 2 goodwill return of the value of A is 31,250. यहाँ पे 15,625, 46,875 for C, and for D it is 31,250. Okay. Now what they are saying, अब हमको ये देखना है कि मिनिमम बैलेंस कितना जाएगा. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सी हुज कैपिटल इज लेस. यहाँ पे देखिए, इफ आई कंपेयर ए का 2,60,000 समथिंग है, इसका 1,55,000 समथिंग है, इसका 2,04,000. सबसे कम किसका है? डी का है 1,36,000. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ट्राई टू फाइंड आउट अ बैलेंस ऑफ डी. यहाँ पे हम लिखेंगे टू बैलेंस कैरी डाउन टू बैलेंस शीट. सबसे पहले हम इसका फाइंड आउट करेंगे. माइनस. ओके, सो दिस इज अ मिनिमम अमाउंट. अब ये सारे जितने भी हम निकालेंगे ये सब इससे ज्यादा होंगे बिकॉज देयर कैपिटल इज मोर. लेट्स सी, देयर कैपिटल इज मोर, है कि नहीं? सो व्हाट वी विल डू, वी विल कंसीडर 1,05,150 एज अ बेस फॉर फाइंडिंग आउट फिक्स कैपिटल. ये कितना यूनिट है? 2 यूनिट है. तो 1 यूनिट कितना होगा बेटा? दिस पर्टिकुलर अमाउंट डिवाइड बाय 2. So I got 52,575. यहाँ पे 3 यूनिट बोला है. 3 यूनिट का मतलब हो गया बच्चा दिस पर्टिकुलर अमाउंट डिवाइड बाय 2, यानी 1 यूनिट का आ गया मल्टीप्लाई बाय 3. ठीक है. एंड हियर इट इज अ 2, ऊपर वाला भी 2 यूनिट है, तो दिस विल रिमेन एज इट इज. सो हियर आई विल राइट 1,05,150 फॉर ए. For B, it will be 52,575, and for C, it is 1,57,725. Now look at here. If you try to find out the ratio between this balance, you will get ratio in the proportion of 2:1:3:2. ठीक है. Now we will try to find out whether there is a difference or not. Now still there is a difference in the total amount. Last two C and D, their account got tally, but A और B का थोड़ा लफड़ा है. तो यहाँ पे हम लिखेंगे to current account star mark. ठीक है. So let's find out here. Minus goodwill amount minus closing balance. Okay. And same thing we will going to do here. For C and D, there will be no current account. So this is how my account got tally. तो मैंने डी के अकाउंट को बेस पकड़ा, वैसे भी डी का अकाउंट बेस ही है, जब तो 0 आया. और बाय डिफॉल्ट सी भी क्या आ गया? बेस आ गया. तो इस केस में अगर हम सी को भी लेते ना बेस तो भी चल जाता. डी को बेस लिया तो भी चल गया, लेकिन हमने डी को बेस क्यों लिया? बिकॉज द टोटल ऑफ द कैपिटल ऑफ डी इज द मिनिमम. ठीक है. नाउ कमिंग टू बैलेंस शीट, लेट write down the balance of each and every partner A, B, C and D. B, C, D. Okay. So amount is
एक आ रहा है 1,05,150, ठीक है। बी का है डिवाइड बाय 2, ठीक है। सी का है 6 मल्टीप्लाई बाय 3 और इसका एज इट इज था, ठीक है। सो माय टोटल कैपिटल इज 4,20,600. आई ऑल्सो हैव अ करंट अकाउंट विद मी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा करंट अकाउंट, ओके, एंड आई हैव अ करंट अकाउंट ओनली ऑफ ए एंड बी, ठीक है। कितना देखिए यहाँ पर 1,24,267 and here we have 87,133, ठीक है। So their total equals to plus is current account 2,11,400, and here in the liability we have only one thing, that is creditors. Amount is दोनों को ऐड किया तो 87,000. So my total is 7,19,000. बेटा मैंने A ड्यू टू AB और उन दोनों को नहीं लूंगा। क्यों नहीं लूंगा बेटा? क्योंकि A को B को देना और B को A से लेना है। जब दोनों पार्टनर होंगे तो दोनों का अकाउंट जीरो हो जाएगा, दोनों अकाउंट आपस में फोरफिट हो जाएगा। सो वी विल टेक इन द असेट ओनली अप टू डेटर्स, और डेटर्स के बाद में सीधा हम कहां से लेंगे? कैश एट बैंक से। गुडविल वी हैव ऑलरेडी रिटर्न ऑफ, गुडविल को हमने राइट ऑफ कर दिया ना, बिल्कुल हमने कर दिया राइट ऑफ उसको। सो हियर वी विल टेक फ्रॉम हियर, एंड बाकी का आइटम यहां से कैश एट बैंक से कैश इन हैंड। सो लेट राइट डाउन द अमाउंट ऑफ बिल्डिंग का कितना है? 2,25,000. Here it is 2,35,000 for machinery. Furniture we have 27,000. Stock we have 60,000. Debtors we have 1,30,000. Cash at bank we have 33,000. Cash in hand we have 9,000. Let's see. Yes, our account got tally. Is it clear with everyone? Yes, sir. I don't think there is any problem. खाली यहाँ पर एक ट्रिक यही था कि we have to take a fixed capital on the base of B's capital, ठीक है। And it was given in the problem itself. क्वेश्चन में दिया था कि आप D को क्या लो? बेस लो। अगर हम D को बेस नहीं लेते तो C के बेस से हम फाइंड आउट कर सकते थे, बिकॉज उन दोनों का क्या इक्वल है। I hope this problem is clear, everyone. Anybody have any doubt in this problem? No doubt, sir. Okay. No, sir. Okay, very good. So now we will move to next problem, which is a homework problem. You have to do it. Problem is very simple. And second thing, this problem was there in March 2019 examination of Idol of University of Mumbai. Let's see. Meena and Naina were partners sharing profit and loss in the ratio of 1:2, whereas Leena and Reena, they are sharing profit and loss in the ratio equally. So दोनों क्या है? Equal है. They are equal partners. Following by the balance sheet as on 31st March 2020, on the liability side we have a capital balance of all the four partners. Then we have creditor, bills payable and outstanding rent with both the company. On the asset side we have a goodwill of rupees 40,000 with Meena and Naina, whereas Leena don't have. Then we have machinery account, machinery, furniture, stock, debtors, fixture, bank, cash. Okay. With both the company. Now let's see the terms and condition
आउटस्टैंडिंग रेंट वाज पेड फुल्ली बाय रिस्पेक्टिव फर्म. आउटस्टैंडिंग रेंट दोनों फर्म अपना अपना पे कर रही है, सो देयर इज नो नीड ऑफ इट टू टेक टू द परचेस कंसिडरेशन. Creditors of both the company were taken by a new firm at 5% discount. Bills payable at book value. दोनों पे क्या है, इस पे तो कोई एडजस्टमेंट नहीं, फिर भी हम टिक कर देते हैं. Machinery subject to 5% depreciation in case of both the firm. ठीक है. Then stock of Meena and Naina was valued rupees 2,21,000. That of Leena 2,01,000. All the assets including cash and bank of both the firm to be taken over a book value. बाकी सब book value पे ले लिया. Goodwill of Meena and Naina was valued at rupees 60,000 or that of Leena and Reena rupees 80,000. Goodwill account is not being retained in a new book or a new firm. ठीक है, तो ये चलेंगे. Now let me tell one thing. What is a new profit sharing ratio? यहाँ पे नए फर्म से हमको माइनस करना, गुडविल हम निकाल देंगे, बट वो तो नए रेशियो से राइट ऑफ होता है ना. सो टेल मी व्हाट इज योर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन न्यू फर्म? Equal. Yes, very good. They all are equal partner in a new firm. ठीक है. कैलकुलेट परचेस कंसिडरेशन एंड प्रिपेयर अमलगमेटेड बैलेंस शीट. बैलेंस शीट बनाने के लिए आपको रियलाइजेशन अकाउंट भी बनाना पड़ेगा और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा, तभी जाके आप बैलेंस शीट बना पाओगे. I hope you can able to do this problem. Problem is very, very simple. And if you have any problem, you can tell me, you can ask me. We can have a special lecture for this in the evening and accordingly we will discuss. But I feel you won't have any kind of problem. So कुछ problem नहीं होना चाहिए आप लोग. Sir. जी. Problem number 15 का balance sheet total बताओ ना sir. Okay. So up to now here, anybody have any problem? No, sir. Can you able to do it at your home? Yes. Okay.